So is my screen visible? Yes, sir. Guys, okay, perfect. ठीक है. So last lecture में हमने देखा ना about UX to start with. We saw design thinking. We saw a bit of different types of project. ये कौन से अलग type of projects है. And at the same time we also saw कि कौन से project type के लिए हमको क्या achieve करना चाहिए. Correct. So या rather क्या research करना चाहिए हमको. So continuing the user research ahead. ठीक है. Now this is a project. ठीक है. One project. This is not the project that we are going to work on. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि वी आर रीडिजाइनिंग एन ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है. सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और द स्कोप दैट वी विल गेट फ्रॉम द क्लाइंट्स. ठीक है. सो हमको क्लाइंट की तरफ से ऐसा स्कोप आएगा दैट वी वांट टू रीडिजाइन वन ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है. नाउ व्हेन वी से रीडिजाइन दैट मींस ऑलरेडी प्रोजेक्ट है और हमको उसको ही बनाना है, उसको ही बेटर करना है. So scope क्या है? We are a leading online travel booking platform. We are seeking to revamp our platform to provide superior user experience and outperform our competitors. We believe a user-centered design approach is vital, and we are engaging our team to lead this transformation. So अभी currently इनके platform पे बहुत सारे issues है. They are not really doing well when it comes to what we say the business overall. So now they want to revamp the entire website, the entire platform. Say for example, book my trip, booking.com, make my trip, yatra.com, and whatnot. There are many different platforms. So one of them is our client, and we now have to revamp it. Correct. So that is the brief from the client. Now, what is the objective? Okay, so now client will say what is our objective. हमको करना क्यों है revamp? So the objective of this project is to completely redesign our online booking platform, enhancing usability. So the first thing that they want to focus on is the usability. हमको usability बढ़ानी है. अभी बहुत सारे issues है. User को समझ में नहीं आ रहा है what needs to be done, what cannot be done. The visual appeal. It is not looking that good. इतना सुंदर नहीं है. Correct? And overall user satisfaction. That when someone comes to the platform, they want that feel, oh, this is what I imagined, and yes, I can do that particular thing in the way I imagined. So we aim to attract and retain a broader user base. So if the platform is doing good, even they will convey the same to their friends, family. There would be more referral, more retentions. Okay. Redesigning online booking platform key goals. Now, what are the key goals for this revamp? Okay. Overall usability, user friendliness of the platform, perfect. Okay. Enhance the booking process. Now we are getting into details, nitty-gritties of the platform. छोटी छोटी चीजें जो bother करती है user को. Enhance the booking process of flights, hotels, and other travel services. Create a visually appealing and consistent design language. There are many times you will see on the website of different websites where a particular page has round edges or sharp edges, whether the other designs are completely different. So that means it is not consistent. Somewhere it is used blue, somewhere it is used red, somewhere it is used green. Again, not consistent. So the third point or the fourth point where what we want to achieve is mobile responsiveness, because 80 to 90% of the people nowadays use mobile phone. So they want, by the way, we are creating a website here. So that means we need responsive. What is responsive? I'll come to that. And increase user engagement and retention, of course. We want more users to come in, explore different options, and be a regular customer, that is retention. Okay. And the expected outcomes, हमको क्या चाहिए from the project. So we anticipate receiving a comprehensive design package, including the wireframes. So first thing that we'll do is the wireframes, interactive prototypes, okay, design assets. Assets means buttons, forms, and final usability test report. So that's fine. The
सक्सेसफुल आउटकम इज फुल्ली रीडिजाइन एंड यूजर अप्रूव्ड ऑनलाइन ट्रायल। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको बहुत सारा ज्ञान आएगा क्लाइंट से। मेन उनका हेतु यही है दैट यू हैव टू design a very good looking website, a good looking platform, a usable platform that gives us more business ultimately. So for that you have to focus on our booking journey, you have to focus on our different aspects of the website or the platform. Now to do that, the first step of UX designer is to do user research. So far any questions, anyone? अभी जो हमने देखा, that is how we get the projects, that is how we get the brief, that is how we understand the client's requirement. Any question so far? Right? No one? Okay, we'll move ahead. Sir, I have one question. Yeah. Sir, I want to ask, like, according to your experience, we'll get old projects, like we have to modify, revamp, as you said. So there are less possibilities to get new projects, or like, what is the criteria according to your experience in industries? On which project we work more, like on new projects or on the old one? So there was a time during the time of COVID, to be very honest, there were ample and ample of new projects coming in. Okay. At the same time, a lot of projects that you will see in the market are revamps. The reason being, existing websites are old. They want to have a new design. Existing mobile apps are old. They want to upscale the experience, right? Then the new projects that come in are those who don't have any web presence. So, for example, if there is a travel agency, for that matter, who have just started out business, correct? So they'll come to an agency or a designer to have their own website, right? But very rarely nowadays you will see that there are new ideas that are coming in. There are many AI projects coming in nowadays, okay, but that is more from the development standpoint. UI में उसका इतना भी काम नहीं है. आएगा once the AI technology is very much sophisticated. Right now it is very much new to the market. Hi, am I audible? Yes, sir. Sorry, the internet got disconnected. Yes. So I was saying there is no such fixed rule कि हमको यही project आता है या ऐसा ज़्यादा आता है. But you can say it is mix. It depends on time to time. ठीक है नितिन? Okay, sir. Yes, I got it. Alright. So now the very first thing that we do in user research is surveys. Okay. अब सर्वे हम किसके पास करते हैं सबसे पहले तो, या किसके साथ करते हैं? अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इट्स एन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, वी हैव टू रिवैम्प. So what we will do is we will frame some questions. Okay. When we frame those questions will be then listed in a Google form.
या टाइप फॉर्म, ऐसे बहुत सारे टूल्स है, बट वी विल फॉलो गूगल फॉर्म्स एंड दोज सर्वेज आर देन गिवन टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. सो मान लो मेक माई ट्रिप हमारा क्लाइंट है, तो हम क्या करेंगे, मेक माई ट्रिप के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को हम वो सर्वे फॉर्म भेजेंगे एंड वी विल गेट द फीडबैक्स ऑन दैट फॉर्म. ठीक है. सो हमको ये पता चलेगा दैट व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज दैट करंटली यूजर्स आर फेसिंग. ठीक है. सो वी विल आस्क क्वेश्चंस इन अ वे दैट गिव्स अस द आंसर correct for the output. But for example, one question can be how often do you use the platform? इससे हमको पता चलेगा यूजर रिटेंशन कितना है. Another question can be what feature do you use the most on this website? तो उससे पता चलेगा सबसे ज्यादा अटेंशन या सबसे ज्यादा फीचर कौन सा यूज होता है. Whether it is flight, whether it is hotel, on which device do you use your website. So whether it is iPhone, iOS, desktop, whatever. So हम ये सारी चीजें उनसे पूछेंगे. Then we will ask them certain questions like what problem do you face while booking a flight ticket. ठीक है. हम रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे जिसके आंसर उनको आंसर इन ब्रीफ देने पड़े. We will ask them specific questions जिसके हमको specific answers मिलेंगे. ठीक है. So when we say what problems do you face while booking a flight ticket, they will come up with specific answers. Correct. So ये एक approach हुआ about the servers. So as a UX designer, we will have to form those questions. That will be our activity to do. ठीक है. The second जो मैंने बोला that would be our activity to do. अब जो second approach है वो है हमारे interviews. अब interviews हम किससे लेंगे? Again existing clients से. अब हम उनसे या तो कॉल पे बात कर सकते हैं या फिर हम उनसे गूगल मीट पे बात कर सकते हैं, whatever is the medium. But again, we can ask them the similar questions. And when you take interviews, you can try to get into their shoes and understand what they are trying to say. ठीक है. जैसे मान लो आप किसी कॉर्पोरेट वाले बंदे से बात कर रहे हो, कोई एचआर बंदे से. You are talking to an HR guy and you ask them how often you book your tickets. So the persona for an HR guy would be different and persona for a family member would be different because an HR guy would be booking more frequent tickets compared to a family guy. Correct. So how these two different personas are replying to the same question, that is what we have to understand. And then in the results we have to serve both the user personas. Okay. So again we have to form. So जो question survey में है, similar questions, but you can add up to those questions while taking the interviews. So that would be more dynamic based on the answers that we give. Okay. Again, for that also you'll have to form the questions. What those questions are, you will do that. Okay. Now coming to the general research. What is general research? Some data and stats that are readily available online. Yes, for example, we will find out how many people in general use mobile or desktop to book their tickets. How many users use platforms to book ticket and how many users use agents to book ticket. Okay. How many users the bifurcation use flight ticket, hotels and train tickets. Uska ek percentage. So all of these data are available on Google, on ChatGPT, on Gemini. So we can use the AI tools also to find out that. Okay, so you have to write those prompts, get the stats, and then while conveying this to clients, it is always essential how we portray it. So we have to tell the clients that we are doing this research so that we know what is currently accepted by the users, what is going on in the market of travels, and how we can utilize that data to make our experience better. Okay, so for that, once we have the general research का data, don't worry, ये सब हम करने वाले हैं. ठीक है. आज भले नहीं करेंगे सब कुछ because this all takes time. So हम step by step इसको achieve करेंगे.
So आगे चल के आफ्टर द जनरल रिसर्च व्हाट वी विल डू इज विल फाइंड आउट द कॉम्पिटिटर्स. तो मान लो हमारा क्लाइंट है मेक माई ट्रिप, तो कॉम्पिटिटर्स कौन हुआ है? booking.com, yatra.com, इज माई ट्रिप, और भी बहुत सारे हैं. सो ऑल ऑफ दीज हम 5-6 कॉम्पिटिटर्स लेंगे, तो उसके एकदम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, और उसमें कुछ हम फैक्टर्स कंसीडर करेंगे. सो एज एन हाउ, सो अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, इट विल टेक टाइम फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप डे 1 से करने लगोगे, लेकिन देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो आप अपने हिसाब से उसको रेटिंग दे सकते हो. जैसे एक होता है नेविगेशन, कि हाउ इजी इज इट फॉर यू टू नेविगेट. ठीक है, एक होगा अबाउट दी व्हाट वी से नेविगेशन. देन वी हैव द एंगेजमेंट. ठीक है, कि जब आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो हाउ इज द फीडबैक, ऑल ऑफ दैट, द एंगेजमेंट है. Then the third part that we can take care is the user reviews that are available online. ठीक है, fourth is the entire visual element, कि सारे जितने भी हमको विजुअल एस्पेक्ट दिख रहा है कैसे है वो, इज द वेबसाइट गुड लुकिंग और नॉट. ठीक है, ऐसे 4-5 फैक्टर्स है, वो भी हम कवर करेंगे हाउ टू डू द कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. एंड देन उसका आउटकम क्या है, दिस एंटायर रिसर्च का आउटकम क्या है, वी विल गेट टू नो द यूजर पर्सोनास. हाउ? सो व्हेन वी डू द यूजर रिसर्च, हमको पता चलेगा कि कौन से यूजर्स हमारे एक्चुअल पर्सोनास है, हमारे एक्चुअल टारगेट ऑडियंस है. ठीक है, वो जब यूजर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, एंड अगेन ये जो जनरल रिसर्च है उसमें द इनिशियल थिंग दैट वी डिस्कस, जिसमें गूगल एनालिटिक्स, हीट मैप्स, वो सब भी आ जाएगा. ठीक है, जनरल रिसर्च में अलॉन्ग विद स्टैट्स एंड डेटा. सो वी विल नो द जर्नी मैप्स. सो व्हाट इज जर्नी मैप? के एक यूजर हो सकता है गूगल से आ रहा है, एक यूजर हो सकता है वो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया से आ रहा है, एक यूजर डायरेक्टली वेबसाइट पे आ रहा है. करेक्ट. सो ऑल ऑफ दैट, all of that together becomes our journey map, that एक यूजर की जर्नी क्या है. So there can be a situation where someone is coming to the website or the platform to book the ticket, whereas one use case can be a user is coming to the platform to only look at his boarding pass. Another can be only to look at his past booking because he wants to give to the HR. Another can be just to find out oh मैंने वो कौन से रेस्टोरेंट में या कौन से होटल में मैंने बुकिंग की थी लास्ट टाइम, I want to go there only again. So there can be different use cases. So we'll only come up with the ones where there is uniqueness. तो अगर कोई ऑलरेडी सिर्फ पास डेटा देखने के लिए आ रहा है तो हर एक की जरूरत नहीं है, वी कैन ओनली हैव वन. ठीक है, सो दैट वे वी विल क्रिएट जर्नी मैप्स. सो इनसाइट्स एंड फाइंडिंग्स इज नथिंग बट जो हम रिसर्च के बाद जो पुट करेंगे स्क्रीन पे, जैसे कि इतने यूजर डेस्कटॉप पे आते हैं, इतने यूजर मोबाइल पे आते हैं, इतने यूजर फ्लाइट्स यूज करते हैं, इतने यूजर होटल वाले यूज करते हैं, दैट इज ऑल इनसाइट्स एंड फाइंडिंग. ठीक है, देन वी प्रायोरिटाइज द यूजर नीड्स. तो इसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, बट दिस इज यूज्ड व्हेन वी डिजाइन द वायर फ्रेम्स. कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके प्लेटफॉर्म पे हाईएस्ट कोई यूज होता है तो दैट इज फ्लाइट्स, तो हम उसको ज्यादा पुश करेंगे सो दैट इट इज इजी फॉर द यूजर्स. यूजेबिलिटी इश्यूज हमको पता चलेंगे फ्रॉम सर्वेस, फ्रॉम इंटरव्यूज एंड वैलिडेशन ऑफ अजम्पशन. हो सकता है बहुत बार हम अज्यूम करते हैं, इवन बिजनेस अज्यूम्स कि नहीं, यूजर ना सबसे ज्यादा होटल की बुकिंग करता है. क्यों? क्योंकि हमको होटल की बुकिंग आती है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है यूजर सबसे ज्यादा लैंड होते हैं फ्लाइट पे, लेकिन ड्यू टू सम इशू दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द फ्लाइट बुकिंग्स. ठीक है, सो दैट कैन बी एन अजम्पशन. वी कैन अज्यूम कि बहुत सारे लोग मोबाइल पे आ रहे हैं, बट ठीक है, बट द रीजन कैन बी दे आर जस्ट लुकिंग एट फॉर द सेक ऑफ इट on the mobile, but actual booking happens on the web, on the desktop. ऐसा भी हो सकता है. Correct. So these are all the assumptions. So we have to validate that. Correct. So just going back again, that the first thing that we do is the user research. For user research, we conduct surveys, we take interviews, we do the general research, which the data that is readily available online. Okay, we take that stats, data, Google Analytics, heat maps if it is available, everything. We do the competitive analysis where
we first see who are the competitors, what are the factors that we need to consider to do the competitive analysis. Then the outcome is these all factors. The outcome of the research is user personas, journey maps, prioritizing the user needs, updating the usability issues, and validating of the assumptions. Okay? Any questions so far? Any? Anyone? Anyone? Yes, sir. Sorry? I have a question. Actually, I'm confused. Last time, I guess you said कि जब भी redesign होगा तभी जनरल रिसर्च होगा ना उसमें गूगल तो एनालिटिक्स सब में ही और होगा. General research. So, हाँ तो फिर research. Okay, let me clarify. I got your question. Sorry. So, general research, हाँ okay, is what is readily available online. हाँ Okay. Now, when it is an existing project, okay, हाँ आप already survey ले रहे हो, interview ले रहे हो, correct? So, in that ओके general research, if the project is existing, then you हाँ also take the Google Analytics and heat maps. अच्छा ओके ठीक है? अगर existing project नहीं है, हम्म if it is not an existing project, तो फिर आप उसमें Google Analytics या वो नहीं ले सकते. ओके तो क्लियर है? इसमें क्लाइंट के इंटरव्यूज आएंगे कि यूजर्स के आएंगे सॉरी, हेलो सॉरी तो इसमें हम क्लाइंट के इंटरव्यूज लेंगे या यूजर्स के यूजर्स जो हम सर्विंग एग्जिस्टिंग यूजर्स के. सो मेक माई ट्रिप के जो एग्जिस्टिंग यूजर्स होंगे ना, तो उनसे हम डेटा लेंगे क्लाइंट से, एंड उसके बाद फिर हम उनसे इंटरव्यू और सर्वे जो भी कंडक्ट करना है वो करेंगे. अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है सॉरी थैंक I यू understand why you got confused. So yes, previously मैंने ऐसे बोला था कि Google Analytics heat map is part of user research, right? अच्छा हाँ. ओके थैंक यू Any other questions? सर आई हैव वन क्वेश्चन. Yes, please. सर जैसे अभी बताया कि किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे वर्क करेंगे तो उसमें क्या यूजर्स का पेन पॉइंट है, तो उसको समझने के लिए सर क्लाइंट जो डेटा है हमारे पास वो क्लाइंट से मिलेगा या फिर जो है डायरेक्टली हम क्वेश्चंस का जो सेट तैयार करके यूजर से पूछेंगे. Sorry, I didn't get you. वापस रिपीट मतलब करेंगे मैं please? यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे जो यूजर का पेन पॉइंट है, जो यूजर जहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है सर, जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, उस चीज का डेटा हमको क्लाइंट से मिलेगा ना कि हाँ. यूजर. तो मतलब उसमें डायरेक्टली जो जैसे क्वेश्चंस आपने बताया कि हम ये टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं जनरली, गूगल फॉर्म्स बनाते हैं तो उस दौरान, तो उस चीज का जो क्वेश्चन तैयार करना है सर, उसका पीछे मतलब समझ में कैसे आएगा हमको कि यही सेट ऑफ क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए, वो हाँ, वो डेटा भी से ही. वो हम कंडक्ट करेंगे. ओके ओके. हाँ हाँ हाँ. सो ठीक है. सो अभी हम क्या करेंगे ना, व्हाट विल डू, you guys will have to tell me according to you what questions you guys will ask to the user. It can be right, it can be wrong, it's fine. खाली हमको इतना ध्यान में रखना है कि the question should give me the pain points, three factor. ठीक है? ये ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाओगे तो ऑटोमेटिक आंसर सही बनेगा. पेन पॉइंट्स हमको जानना है. सो व्हाट आर द पेन पॉइंट्स, what are the behavior of the current users, and what is the mindset of the current users. ठीक है? So हमको ये जानना है. So based on that, what are the questions that you will form for surveys? आपको जो लगता है, it can be right, it can be wrong, anything. So एक है what is the most important feature you need. ठीक है, next. Others? Think. सोचो. There can be many questions. Think of it कि आप
एक यूजर के साथ में बैठे हो और आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपकी खुद की वेबसाइट है, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, यू वांट टू मेक इट बेटर, व्हाट ऑल क्वेश्चंस विल यू आस्क दैट यूजर? ये सर थॉट प्रोसेस एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेरे को मैसेज में, ओके ओके so everyone can see. Come on everyone. क्या क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हो आप? थिंक. दृष्टि, नेहा, नितिन, स्वाति, विनती, what questions can you ask? Start with basics. Think of it as if you are talking to a client. आपके खुद के client से आप बात कर रहे हो. Think from that perspective. What color do you want? In which step user face most of the problem? So user face नहीं, you. It has to be you. हम ये questions directly एक user से बात करेंगे. So मान लो मैं client हूँ और आप सब मेक माई ट्रिप के ओनर हो, आप सब मेक माई ट्रिप के फाउंडर हो, आप यू गाइज हैव क्रिएटेड मेक माई ट्रिप फ्रॉम स्क्रैच, यू गाइज हैव डिजाइन्ड इट, यू गाइज हैव डेवलप्ड इट, it is your baby, it is your product. Now I am the user and you want to revamp your website because it is 5 years old. What questions will you ask me? You will not ask me this, no? In which step user face most of the problem to book a ticket from starting to end? Will you talk to me like this? No, right? Frame the questions as if you are talking to me. So, Drishti, what color do you want? Irrelevant question in the first place, right? Because it is not how it looks only, correct? And for example, if you say, what color do you want? Females will say pink, females will say magenta, they will say from a wide spectrum of colors, some name that I don't even know. As I said, be specific, not that specific. Color ka part. Again, frame questions as if you are talking to me. आप मुझसे डायरेक्ट नितिन ऐसे नहीं पूछेंगे which feature is mostly used. मुझे क्या मालूम आपके प्लेटफॉर्म पे कौन सा फीचर ज्यादा यूज होता है? प्लेटफॉर्म आपका है, ठीक है. गुड क्वेश्चन. Where did you get to know about our website? Nice. Others? Neha, Drishti, Vinti, others. So this is the type of question we want. एक क्वेश्चन ये भी है जो दृष्टि ने सबसे पहले डाला है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यू नीड. ठीक है, फाइन. अदर्स, थिंक थिंक थिंक, इट कैन टेक टाइम बट थिंक, दिमाग चलो, जो भी आ रहा है इसमें ऐड करते रहो. एटलीस्ट पता तो चलेगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये नहीं पूछना चाहिए. लाइक हाउ दृष्टि एडेड, हाउ नितिन एडेड. सो पता भी चलेगा अगर गलत है तो भी, दैट ये नहीं पूछना चाहिए. करेक्ट. What is the first thing you want to do on the website? Rather, I would say, what is the first thing you do on the website? ठीक है, उसको थोड़ा ट्वीक करेंगे. So, did you land on a website for booking a hotel room or for travel? So, last, travel is again very wide question. What is travel? Or, and again, frame the question in a way you won't ask me why did you land on a website. What is the purpose for you to come to a website? And then you can give the options in the answers, right? Whether it is hotel booking, flight booking, or train booking. Yes, Neha.
सर एक्चुअली आई एम सर एक क्वेश्चन है मेरा, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो आपने क्वेश्चन मतलब किस बेसिस पे, मैं समझ नहीं पा रहा कि सर क्वेश्चन क्या डायरेक्टली यूजर से पूछना है या क्लाइंट से क्या पूछना है सर? नहीं नहीं नहीं, अगेन सिचुएशन ये है, आप ओनर हो मेक माई ट्रिप के, ओके। ठीक है? हम्म। तो अब क्लाइंट कौन हुआ? मैं हुआ, ठीक है सर। ठीक है? अब आपको क्वेश्चन पूछना है मुझसे। जब यूएक्स डिजाइनर क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो मेक माई ट्रिप की तरफ से पूछता है, ओके। ठीक है? हाँ, क्योंकि मेक माई ट्रिप की टीम का हिस्सा होता है ना यूएक्स डिजाइनर। हम्म। हाँ, सो वो मेक माई ट्रिप की तरफ से ही पूछेगा। सो टू आप मेक माई, इम्प्रूव द वेबसाइट। हाँ, सो आप मेक माई ट्रिप हो, सो आप वन टू वन मुझसे बात कर रहे हो। सर्वे में भी जो क्वेश्चंस है हमेशा ऐसे ही होंगे, दैट यू आर टॉकिंग वन टू वन, ओनली देन आई विल गिव यू आंसर, माय पर्सनल आंसर्स ना। क्लियर है? समझ में आया? मोर मोर मोर, सोचो गाइस, देयर आर मेनी क्वेश्चंस। अब तक किसी ने मुझसे मेरा नाम ही नहीं पूछा है, बाय द वे। What would you like if we design the itinerary for you? Okay, you'll be able to choose number of days. If you ask users what they want, they will only say faster horses. ठीक है? This type of question, जो itinerary वाला, it is not wrong. ठीक है? It is not wrong, but it can be needed when you are coming up with that feature. ठीक है? Question wrong नहीं है, but you have to keep in mind that, for example, अभी currently हमारे पास make my trip है, itinerary का feature नहीं है. But if you are coming up with feature, you want to do that validation. That would you like if we design the itinerary for you? If a lot of people are saying yes, then it makes sense for me to work on that feature. If a lot of people are saying no, doesn't really make sense. Correct? So Nitin asked for user details. What are those user details? उसको mention करो. How appealing do you find a website? What kind of first वाला जो part है विनती, how appealing do you find our website? बस उतना ही. What kind of changes you want? Very broad question. सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है. Why? यूजर से ब्रॉड क्वेश्चन पूछोगे वो भरेगा नहीं, पहली बात. और दूसरा, वो आंसर इन ब्रीफ देगा आपको 10 मार्क वाला, हमको नहीं चाहिए. We want specific answers. So how appealing do you find our websites? वेबसाइट, तो उसमें आप रेटिंग दोगे between 1 to 5 और 1 to 10. So we will know कि कितने यूजर को कितना क्या अच्छा लग रहा है. तो ईमेल, कॉन्टैक्ट, प्रोफेशन, एज, सबसे पहले नाम पूछोगे नितिन. यस. सो और इसमें एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम पूछेंगे नाम, हम पूछेंगे जेंडर, हम पूछेंगे एज, हम पूछेंगे लोकेशन. ठीक है? ईमेल कांटेक्ट नहीं हुआ चलेगा. वी डोंट रियली नीड दैट बिकॉज दे आर ऑलरेडी माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, मेरे पास उतनी डिटेल होगी. बट फॉर प्रीवियसली रीजंस मे बी मेक माई ट्रिप वाला मेरे साथ शेयर नहीं करेगा. एंड प्रोफेशन. तो ये 5 चीज इंपॉर्टेंट है. आई विल रिपीट. नेम, एज, जेंडर, लोकेशन एंड प्रोफेशन. Why do we need these 5 things? अब मैं उसका एक्सप्लेन करता हूँ. नेम ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. एज हमको चाहिए so that we know the range of the users coming to our platform. कि कौन से एज ग्रुप के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा आ रहे हैं. तीसरी चीज जो हमने बोली थी, दैट इज एज, जेंडर. वी विल कम टू नो कितने मेल आ रहे, कितने फीमेल आ रहे. फोर्थ चीज, लोकेशन, बहुत जरूरी है. वेदर ओनली टियर 1 cities are coming or tier 2, tier 3 are also coming to our platform. That is a very important factor for us. And lastly, profession. ये जो सिर्फ एकदम हाईली एजुकेटेड है वो आ रहे हैं, बीकॉम वाले भी आ रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग बीकॉम वाले एजुकेटेड नहीं है, जस्ट सेइंग. खाली मैंने डिग्री का नाम बोला, डोंट गेट ऑफेंडेड
अगर कोई ऐसा है तो, या someone who is not educated, for example XYZ location की कोई lady who is good with using the technology but she is not having a good education background but she is well versed with technology, हो सकता है, correct? So we will come to know from these 5 factors. तो ये जो 5 factors है, those are very important and only important for our personas. अगर ये 5 चीजें हमको पता है, नेम जाने दो, 4 चीजें अगर हमको पता है, then we can start building a personas. ठीक है, ठीक है. और what are more questions? और कौन से questions है? Think guys, think. 4-5 questions are really good. What are other questions? अगर आप डिजाइनिंग करोगे, आपको ये डे इन डे आउट करना पड़ेगा. जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, the entire month of the initial project goes in research, जिसमें आप यूजर से बात करते हो, जनरल रिसर्च करते हो, सर्विस कंडक्ट करते हो, इंटरव्यूज कंडक्ट करते हो, सब कुछ चलेगा महीने भर का. What factors are more important when you're planning a trip? Perfect. A very good question. Yes. See, you guys are starting to think. Again, Vinti, very subjective question. As a developer, for me the website can be easy. For a housewife, it can be difficult. For an aged guy at the age of 60, it can be difficult. Very subjective questions. सोचो और सोचो. You guys have started thinking, which is good thing. I'm liking it. Did you find the booking process? Which booking process? Flight booking, train booking, hotel booking? Be precise there. But it's a good question. Do you find booking process convenient? Yes or no? If they say yes, what do you like in the booking process? Right? ये ऐसे add-on questions होने चाहिए. If they say no, what difficulties do you face while booking process of flight or whatever? So this is how you build up questions in interviews. Next, next, next. What's more? मैंने बोला ना, ये थॉट प्रोसेस रखो कि आप ओनर हो और आपका आपका प्रोडक्ट सुधारना है. आप कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो यूजर से? थिंक थिंक थिंक. Come on guys, सोचो. दृष्टि, नेहा, नितिन, स्वाति, विनती, सोचो. इतनी आसानी से मैं गिव अप नहीं करूंगा. आई एम श्योर और क्वेश्चंस है आप लोग के पास. गलत होगा तो भी ठीक है, आंसर तो करो और क्वेश्चन डालो तो सही. इट्स फाइन इफ इट इज रॉन्ग. डोंट बी स्कैर्ड. दिस इज हाउ यू विल लर्न. थिंक. Did you find the which platforms do you use for travel planning? Since we are asking our clients, you can term it as which other platforms do you use for travel planning, so that we know our competitors. ठीक है, उसको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा. नेहा का क्वेश्चन, which other platforms? Did you find the hotels for booking? Of course, they will find the hotels for booking. Term it as, do you always find the right hotels for booking?
करेक्ट, व्हाट्स मोर, ऐसे ही सब क्वेश्चन से पता चलेगा ना. कीप गोइंग, कीप गोइंग. यस, मोर क्वेश्चंस प्लीज. नहीं, और क्वेश्चंस नहीं आ रहे. Can we ask about? Yes, of course. Yes, yes, yes. Why not? We can ask about customer service. 100%. Did you use? So नितिन, यहाँ पर हमको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछना है. So ये वाला क्वेश्चन इररिलेवेंट हो जाएगा, IRCTC वाला. नेहा का क्वेश्चन अच्छा है. हाउ फार इन एडवांस, वेल इन एडवांस डू यू स्टार्ट प्लानिंग योर ट्रिप्स? सो हमको इससे ये आइडिया आएगा कि इमीडिएट बुकिंग वाले कितने हैं, और पहले खाली बुकिंग आके कंपैरिजन करते हैं, प्राइस वगैरह, फिर प्लान करते हैं और फिर बुक करते हैं, वैसे यूजर्स कितने हैं. तो एक गुड क्वेश्चन है. और कीप थिंकिंग, पहले शुरू कहाँ से किया था, अभी कहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं. थिंक. दृष्टि has left. Do others review and recommendations matter to you? Perfect, a very good question, so that we know that how valuable our reviews and recommendations on the platform are to others. कोई देख भी रहा है कि नहीं? Very good question. Yes. अच्छा चलो ठीक है. Let's pause the question for a while. Now think about who all can be our target audience. हमारे प्लेटफॉर्म पे मेक माई ट्रिप पे कौन कौन आ सकता है, ठीक है? वो पोस्ट करो, वो मैसेजेस में डालो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपको यही फॉर्मेट में लिखना है. बिजनेसमैन, करेक्ट. सो मैं फॉर्मेट बोलता हूँ, वो बिजनेस वो फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है? HR पर्सन एट द कंपनी बुकिंग टिकट्स फॉर हिज और हर एम्प्लॉइज. ठीक है, ये पर्सोना हुआ. तो स्वाति has added one more thing. Did you encounter any issues on making the payment? ठीक है, अगेन ये थोड़ा ब्रीफ आंसर हो जाएगा, बट वी कैन थिंक ऑन हाउ वी कैन मेक इट प्रिसाइज या MCQs वाला टाइप. ऐसा कर सकते, डू यू ऑफन एनकाउंटर इश्यूज व्हाइल मेकिंग द पेमेंट? So if it is yes, then we know कि कुछ तो प्रॉब्लम है. If it is yes, then we can ask what is the problem. If it is no, then it is fine. Okay? So yes, अब now persona post करो. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, an HR person booking tickets for employees in the company. ऐसे कौन कौन से यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, वो पोस्ट करो. और नितिन, मैंने जैसे बोला वैसे फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा.
मार्केटिंग मैनेजर्स किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं? इट कैन आई बिकॉज सी, अभी मैं आपको दूसरा पर्सोना का एग्जांपल देता हूँ। ये फैमिली में नॉट एवरीवन बुक्स टिकट, there is one person who books ticket, yeah, who books a flight, yeah, who books a hotel, correct? So it can either be a father, it can either be mother, it can either be one of the sibling. So uska persona kya banega? Father booking ticket for family travel, but the same father can also book ticket for himself for business purpose. So these are different personas हैं. So ऐसे लिखो, persona ऐसे define करो एक ही लाइन में खाली, father booking ticket for himself for business, father's booking ticket for family, ऐसा, ठीक है? तो मार्केटिंग मैनेजर्स आगे क्या, बिजनेसमैन आगे क्या? बिजनेसमैन खुद के लिए भी कर सकता है, फैमिली के लिए भी कर सकता है, तो वो फिर ओवरलैप हो जाएगा, बिजनेस फादर मैन इट्स वन इन द सेम वे, ठीक है? तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। डालो गाइस, पर्सोनास को ऐड करो, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। कौन सी यूजर आते हैं? एल्डेस्ट डॉटर बुकिंग टिकट फॉर अ फैमिली ट्रिप टू वृंदावन, परफेक्ट। ट्रिप ऑर्गेनाइजर बुकिंग टिकट्स फॉर ग्रुप, परफेक्ट। यस, हु एल्स? गुड गोइंग गाइस। नितिन, आपका वो मार्केटिंग मैनेजर वाला बस थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको लिखने में। मार्केटिंग मैनेजर सही है। इवन विनती, बिजनेसमैन आगे थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें। इंटीरियर डिजाइनर बुकिंग टिकट्स फॉर अ साइट विजिट एट गोवा, परफेक्ट। नेक्स्ट। ओकेशन सोचोगे ना, ओकेशन तो पर्सोना जल्दी मिलेगा। एक किस ओकेशन के लिए बुक करते हैं टिकट्स, सो पर्सोना जल्दी मिल जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर्स फॉर देयर क्लाइंट्स, यस। ट्रैवल एजेंसी बुकिंग टिकट्स फॉर देयर टूरिस्ट, ठीक है? तो वही हो गया, नेहा ने जो ऑलरेडी बोला था, ट्रिप ऑर्गेनाइजर इट्स वन एंड द सेम। फॉर ग्रुप्स करो या टूरिस्ट करो, इट्स द सेम थिंग, so that's an overlap. Next. Family head booking, bulk booking for कथा, it's the same, जो ऊपर लिखा है eldest daughter, वो family head वही हो गया। If you have a specific person to define, then do it like you did for eldest daughter. Friend booking a trip for the friend circle for Goa, yes, 100% correct. What else? What else? ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल कभी बुक नहीं करता है टिकट्स, देयर आर गाइज टू डू दैट, बट ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। स्कूल स्टाफ बुकिंग टिकट्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, वो कर सकते, प्रिंसिपल कभी नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, बट गुड पर्सन। नेक्स्ट। हस्बैंड बुकिंग हनीमून ट्रिप हो सकता है पर्सोना, राइट? फ्रेंड्स बुकिंग, नॉट फ्रेंड बट guy booking a trip for their parents, for his parents. Colleague booking ticket for himself to attend another colleague's wedding. हाँ ठीक है, हो सकता है यहाँ पर। I would probably like to have the cheapest flight when I'm booking for a colleague's wedding. Yes. Manager is booking a hotel stay for their team member of a perfect.
right, Vinti? Parents booking tickets for their son destinations wedding. Yes, 100% correct, right? So you guys are now thinking, you know. So अब यही lines पे आपको करना क्या है? This is your assignment. आपको सिर्फ इतना पार्ट है, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इतना पार्ट आपको इतना डिफाइन करना है. एक बंदा कोई रैंडम पिक्चर ले लो, कोई रैंडम नाम ले लो, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका एज क्या है एंड उसका लोकेशन क्या है, ये डिफाइन करो. इट कैन बी हाइपोथेटिकल बट हैज टू बी रिलेवेंट. ठीक है. एंड ये थोड़ा बायो चाहिए, उस बंदे का थोड़ा बायोग्राफी चाहिए, इतना 2-3 लाइन. दैट इज हैविंग 10 years of experience in accounts. He is a CA by profession and travels a lot for his audit and consultancy. He is very foodie and loves to travel different places. That's why he loves his job even more. तो ये एक बायोग्राफी हो गई. अब अभी टू स्टार्ट विद पर्सोना में ओनली डिफाइन दिस थिंग्स, ये इतना थिंग. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? आप जितने सोच सकते हो ना उतने पर्सोनास बनाओ. दिस इज योर असाइनमेंट. क्लियर? यस. Okay, sir. And the other assignment, you guys have to frame questions. So these are the example of survey questions. It can also be used for interview. जैसे ये questions ही नहीं, उसके साथ उसके आंसर भी आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे अगर मल्टीपल चॉइसेस है. So I'll give you an example. Name, age, gender, location, profession. Do you use online travel platform? Yes. No, I prefer agent. How often do you use travel booking platform to book your holidays? So we know the time frame. Which travel booking platform do you prefer? Correct. अब ये जो क्वेश्चन था मैंने इसलिए फॉर्म कराया था क्योंकि दिस वाज अ न्यू प्लेटफॉर्म, इट वाज नॉट अ रिवैम्प. व्हाट डू यू बुक द मोस्ट? होटल, फ्लाइट, एटसेट्रा. डू यू प्लान योर हॉलीडेज ऑन अ फिक्स्ड बजट? यस, नो. विथ whom do you travel the most? It can be alone, friends, family, business trip. Factors do you consider while planning? ये एक क्वेश्चन पूछा था, राइट, किसी ने. So cost, etc. Mostly, what do you prefer booking from? Right? Issues you currently face in travel platform. Difficult to find the right package. If you have these pointers, then you can ask such questions. Do you book immediately? ये किसी और ने पूछा था, right? क्वेश्चन डाला था. How well in advance do you book your ticket? Do you prefer post sale service like while traveling? So ये जो customer service वाला question था, ये वो है. So these are some 15 questions that I thought are relevant. ठीक है. Now ये जो पार्ट है, ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? पर्सोनास पे क्या करना है? इज एवरीवन फाइन विद दैट? I'll again show you that. I'll also post this screenshot in the group. ठीक है, कि क्या करना है. ठीक है, इतना ही पर्सोना बनाना है अभी हमको. उसके आगे का हम बिल्डअप करेंगे. So you all have to create personas as much as possible. Figma में ही बनाना है, जैसे मैंने बनाया ये लेआउट में. उसमें एक और चीज ऐड कर देना, प्रोफेशन. And you guys have to frame the questions for surveys. You guys have to frame the questions for surveys along with these multiple choice answers. Clear? Form at least 20 questions. मैंने जो लिखे हैं, on which topic? Yes, I'll give you the project in the group. हमको प्लेटफॉर्म, ये ट्रैवल प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं करना है. This was just an example. फिर जो मैं प्रोजेक्ट डालूंगा ग्रुप में, that is the project that will complete throughout the course. उसका ही हम पूरा रिसर्च, वायरफ्रेम, everything will do for that project only and also the UI. ठीक है. Any questions? Others? Or are we good? If no response, I'm assuming everything is fine. Everything is fine? ठीक है, कुछ बोल भी दो. Yes, no? Yes, sir. ठीक है, चलो बढ़िया. So
आज आई नो थोड़ा ओवरडोज हो गया है, बट दैट इज हाउ यू विल लर्न. तभी दिमाग की बत्ती चलेगी. करेक्ट. यू विल थिंक in a different way. You'll think as a designer, as a UX designer. So, two assignments. I'll give you the project. For that project, you have to write the questions, form the questions and the answers for MCQs, and you have to write all possible personas. Clear है? Yes, Nitin. सर यूजर पर्सोना कितने मतलब बनाने, 5 6 ऐसे कुछ आप नंबर? जितने सोच सकते हो, ओके. जितने सोच सकते हो. ठीक है एवरीवन? ठीक है, डन. Yes, sir. सो कोई कुछ बोला? ठीक है. So we'll end our lecture here only today. I don't want to overwhelm you guys with a lot of things because general stats के लिए भी था एक, but I think you guys will need some more time to digest, to get into that zone. So complete this assignment. We'll meet again on Tuesday. ठीक है? And Tuesday को we will go through this personas and the questions. जो आप लोग ने क्या बोलते हैं कॉपी किया है, दैट इज फाइन. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कंप्लीट दैट. जिसने नहीं किया है एंड जिन्होंने किया है, वेल एंड गुड, कीप डूइंग दैट एज वेल. अगर आपका इंटरव्यू अरे क्वेश्चंस और ये पर्सोना हो जाता है, पोस्ट दैट इन द ग्रुप अगेन. ठीक है? एंड जिसका हो जाता है, द नेक्स्ट असाइनमेंट फॉर यू वुड बी टू कॉपी यूट्यूब का वेब वर्जन. कॉपी यूट्यूब का वेब वर्जन. ठीक है? So let me know if you have any doubts, any queries. You can ping me anytime. Don't wait for the lectures. All right. So that's it for today, and wish you all the best for the assignment. Have a good weekend. Looking forward for great responses, great personas, and also for you guys to complete the pitch.com and YouTube. Right. Thank you so much, guys. See you next week. Bye.